I think we should start now. Dr. Anuj sir. Yes, sir, I'm With your here. kind permission, should we start now? No, definitely, sir. It's your platform, sir. Please, Thank you. Thank you very I'm much. here. Anita Mehta. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon to all the respected dignitaries, esteemed resource person, faculty members, and research scholars. It gives me immense pleasure to welcome you all to day 4 of the 10 days national seminar being conducted by Mahavir University, Meerut and PACE, India. Over the past 3 days, the seminar has offered a rich academic platform for meaningful dialogue, critical reflection, and scholarly exchange. Today's session further adds depth to this ongoing intellectual journey. I am Anita Mehta, a PhD research scholar from Mahavir University, and I wish you all the very happy and prosperous Makar Sankranti. Before we begin, I would like to request everyone to keep your microphone on mute and post your questions in the chat box, which will be taken up during the question answer section. So, formally beginning the session, to seek divine blessings for wisdom, clarity, and academic excellence, we now begin today's session with Saraswati Vandana. So I request everyone to kindly join for the invocation. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही माइक. Sorry, sir. So, to formally welcome the gathering and set the academic tone for today's session, I now invite Dr. Shivpal Singh, Dean, Faculty of Education, Mahavir University, to deliver the welcome address. Sir, I request you to kindly take over. Thank you, ma'am. Thank you very much. Respected chief guest of the day, eminent resource person, Professor Dr. Anuj Raj, respected members of the organizing committee, esteemed principals, teachers, research scholars, participants, and my dear colleagues. A very warm good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure and a deep sense of academic satisfaction to welcome you all to the 4th day of the 10-day national seminar on research methodology in humanities and social sciences, jointly organized by the Faculty of Education, Mahavir University, Meerut, in collaboration with the Principals Association of Colleges of Education, PACE, India. On behalf of the organizing committee and as the chief convener of this national seminar, I extend a warm and heartfelt welcome to all the participants who have been consistently showing enthusiasm, dedication, and scholarly interest throughout the academic journey. Today, we are highly privileged to have with us our distinguished academicians and experienced researcher, Professor Dr. Anuj Raj. He is a professor, Department of Education, Swami Vivekanand University, Meerut. Professor Dr. Anuj Raj
is widely respected for his scholarly contributions, rich teaching experience, and deep understanding of the research methodology, particularly in the field of education and social sciences. His expertise in research, design, data collection, strategies, and empirical investigation makes him an ideal resource person for today's highly significant theme. We feel honored that he has kindly consented to share his valuable insights with our research scholars, teachers, and young academicians. The theme of the theme of today's session is observation, population size and sample size interview, online interview, and data collection tools. This theme lies at the very core of empirical research. No research, whether qualitative, quantitative, or mixed method, can be considered scientifically sound without a clear understanding of how data is observed, collected, sampled, and measured. In research methodology, data is not merely information, it is a evidence. The quality, reliability, and validity of research finding largely depend upon the appropriateness of observation techniques, sampling, decision, interview methods, and tool of the data collection. Today's session will certainly strengthen the methodological foundation of all participants. Expectation from the session. I am confident that today's deliberations will be clearly clarify conceptual method, provide practical research guidance, bridge the gap between theory and the field practices, and enhance participants' confidence in the conducting systematic and ethical research. I once again extend a cordially welcome to Professor Dr. Anuj Raj and thank him to sparing his valuable time for this academic endeavor. I also welcome all participants and wish them a highly enriching and productive learning experience. With these words, I now invite our esteemed moderator to kindly take over the session. Thank you very much. Jai. Thank you, sir. Thank you for your kind and thoughtful words. We now move to the introduction of today's distinguished resource person. I request Ms. Malvika Dadu, PhD research scholar, Mahavir University, Meerut, to kindly introduce our esteemed resource person, Dr. Anuj Raj. Ms. Malvika. Thank you, Anita. And it's my privilege to introduce Professor Anuj Raj here today, a distinguished academician, educationist, and researcher in the field of education. He is presently serving as Professor and Chair Professor, Dr. Ambedkar Chair at Swami Vivekanand Subharati University, Meerut, and is also a UGC IKS Certified Master Trainer of India. With over 24 years of teaching, research, and academic leadership experience, Professor Raj has made significant contributions to teacher education, educational technology, research methodology, and evaluation and measurement. Under his able guidance, 12 PhD scholars and 29 postgraduate researchers have successfully completed their research work. A prolific scholar, Professor Raj has authored 3 books, published more than 60 research papers, and contributed 15 chapters in reputed national and international publications. He has also played a vital role in developing distance education course content for various universities and has successfully handled government funded projects worth 2.76 crores. Professor Raj has delivered over 65 invited lectures
and research presentations at national and international forums, and serves as a reviewer for several reputed academic journals. He has held several important administrative positions, including Dean, Head of the Department, Associate Dean, Controller of Examinations, and is presently serving as Nodal Officer for the Samagra Shiksha Social Audit Project for 18 districts of Uttar Pradesh. A committed advocate of the Indian knowledge system, Professor Raj continues to contribute actively to academic excellence, policy implementation, and institutional development. Please join me in warmly welcome Dr. Professor Raj. Yeah. Thank you, Malvika. Can you listen? First of all, I just want to, my voice is clear or not? Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, thank you. Thank you, Malvika. And thank you, Anita. And really, it is great pleasure for me that you have invited me for this lecture and this discussion. I will say that it is suitable for the discussion because every participate will just, I think more than 50 participate are just join this group. And really, thanks to, first of all, the management of the Mahavir University, especially the chairman and the vice chancellor of the university. Really, it is great pleasure to me that I am just here and speaks with the people of the Mahavir University and their, we can say, participant. And thank you for the special thanks to the Sipal Singh sir because he is always just doing this so many organize the so many events in different institutions. Thank you, sir. And you have invited me for this nice. I can say it's my choice, and you have given me very good topic to just speak on this thing. And you will speak so many things about the research and all the things. And really, thanks to another Dr. Brijesh Kumar and Dr. Lokesh Kumar is just associate with you and Monica ma'am, the chairperson of the Mahavir University. I thanks to all of you, sir. And really, it is a, I think, first of all, I want to just speak with the participant that which language you will just prepare. Yes, please. If anybody, yes, in English, yeah, Hindi, yeah, dual mode. Yeah, please. If anybody. So Yeah. better it will be in English. It is English, okay, Yeah. and it's okay. Thank you, and hopefully you will understand this thing. And it is very great. And now I will share you the some PPT, my PPT with you. And if you look this thing, it is visibly or not, please. Yes, sir. We can't see anything, sir. Yes, please. Yeah, It's it's okay or visible, sir. not. It's It's visible or visible. not. It's a bit. It's visible. Okay, thank you. Today, my topic is just focusing on the observation. Sarich also said that population size, sample size, and online interviews, and data collection tool because it is a very important for the research point of view. And सर as सर yes, please. अभी ये फुल स्क्रीन पर नहीं हुआ है. Okay, I will do this thing. Yes. Now it is okay. Sir, please tell me. सर अभी नहीं हुआ. हाँ अब हो गया. Yes. यस सर. यस. Kindly share the screen in full scale, sir. I will share my screen, the full screen. Yes, I will share. Because I want to check the people also, na? Because if I will share my screen, then the people will not just, can't see you. Okay. So I have just split this my screen. Yes, sir.
Sir, no sound, please. Sir, we couldn't get your voice. Okay. Yes. It's now okay? Yes, Hello. sir. Okay. पीपीटी अभी सिंगल नहीं हुई है, आप दोनों लोग दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, पीपीटी दिख रही है एक स्क्रीन पर, तो थोड़ा अगर नहीं, इसको ये इनलार्ज कर दिया जाए तो आई थिंक इट विल बी गुड. एक्चुअली आई वांट टू जस्ट चेक ना कि मैं भी दिखूं तो जरा अच्छा रहेगा सर. अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स ओके सर, ओके. दैट्स फाइन. नाउ इट्स ओके. ओके सर, थैंक यू. थोड़ा मेरे ये थोड़ा सा ये कि नाउ इट इज ओके. ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ. My objective will be on the base on the first of all understand the concept of the observation as a research method, define the distinguished population size and sample size in research, and then explore. We'll discuss about the advantage and limitation of very interviews and online interviews, and identify the various data collection tools suitable for the quantitative research. So, first of all, we understand what is the research, and this is the demand of the things that if you go for the meaning of the research, and if you go this thing, then the scientific research is systematically controlled, empirical, and critical investigation of the natural phenomena guided by the theory and hypothesis about the reasoned relations among the such phenomena. And this is given by the Karlinga. But in very short, if you'll just say that the research is begin with the some problem and we solve that problem with help of the some data collection method. And on the basis of data collection method, we just analyze these data, and then so we can say that research is a careful study of the topic and discover new information, understand relationship, and solve the problem by using scientific method. This is very simple meaning of the research, and everybody is just in always we are just involving in the research process and finding the something in for the social benefits in every day. So this is not a very tough task, but when we talking about the research, it is a careful study. And careful means we need to just to explore the some factors and some solve the problem by using the scientific method. And what do you understand with the scientific means we testify the some facts with the some findings, reliability and validity will check on the basis of fact, then we will just going beyond this thing. So, research, especially when we talk about the social sciences, and it may be defined as the finding the answer the questions and collections of the method people use to produce knowledge and existing process of the discovery. Existing process of the discovery means the present we just follow the some procedure, and that procedure when we just follow the in the research methodology when we especially we are focusing on the collection of the data. So, but there are the so many components. If we talk about the component of the research, the important is factor is that first of all we just check, yeah, we just identify the problem in social beneficial. If the problem is not societal benefits, then we will just explore the new idea and all the things. The first is that we identify the problem, and then we just write the some research questions. What will be the purpose of our research? We're just thinking about this, and then the theory, assumptions, background, literature, and then what variables and what hypotheses we will just frame for the our research problem. Then we will just finding the operational definition and measurement, and next step will be the research design and methodology. We just fix the research design and methodology, and then on the basis of the research design and methodology, then we just finding the instrument for the data collection, what instrument, yeah, research tool we will use, and how we'll just what from where we will collect the data. That is the important, and then we will talk about this thing today, and what will be the sampling process, and then after that we will just analyze. We will just suppose collect the data by using the some instrument, then we will just after collection of the data we analyze the data with help of the some statistical software, yeah, we can say use the statistical method. Then after data analysis we conclude, and then we interpret our results, and then we just suggest the some recommendations for the
other we can say research scholars, yeah, scholars, yeah, for the society. So this is the important component of the research, especially when we talk about, and this is the again I have just given here, the identify the problem, the review of how can we just uh, find the problem, then first of all we identify, then on the basis of problem, then we will just find the some review, then we formulate the objective and hypothesis, then choose the method, right method, collect the data, analyze the data, then interpret the result, then we find the publish our result, and after writing the report. These are the steps. I think you are well aware about this thing. But when we talk about the research observations, because the main focus of the today topic is the observation, because what will be the observation, how can, when we just taking any research field, and suppose I'm just going for to do my research in some problem, then what will be the observation? And observation is the systematical method of the collecting data by watching behavior, events and condition directly. So this is the one type of method where we collect the data, and observation is very we can just sometimes we will just useful for the social sciences, especially in the psychological and in education field, and mostly the research are used the observation in the behavioral studies, and it helps get the real world insights without the relying solely on the self report. So on the basis of this, then sometimes we will use the recording methods we can use to check the behavior of the this for the observation methods. So there are so many types of methods, and first of all, if we'll talk about the observation of the method, then this will be the mm, then the method is the first method will be the participants and non-participant method, and second is structure and non-structure, and natural and control. So we can go for this thing, and suppose we participate means if anybody wants to ask any question, you can just raise your hand, and then I will just discuss with you, because it's otherwise it will be the monotonous. Yes. The first type will be the participant, and participant observation means when the researcher actively take parts in the group's activity and provides the deeper insight and context. So this is the important aspect, that suppose I am just doing some research work, and I'm already part of that type of that group, and then I will observe from the inside of that group. The research actively take part in the group activity and provide the deeper insight and context. The second thing is that if we take the example, the teacher joining the student group to study the peer learning. So this is the example, and so it's very clear that we need to just, when we just do the participatory observation for our research purpose, so researcher will just part of the that particular group where we will collect the data. The second is that non-participants observation, and for this purpose the researcher observed without direct, we can say, involvement. The researcher will not be part of that particular group, and then he will observe, maintain the some objectivity and reduce the biasness. So this is the non-participatory observation. Suppose I suppose if anybody is doing conducting the research, and want to just checking the behavior, classroom behavior, and then he just checking the student behavior from the back of the class, because he will not part of that class, but he just watching the video, yeah, from distance, yeah, see, he just watching the classroom behavior from the back of the classes. So this is the non-participatory observation. This is kind of method. But when we talk about the some structural, we can say some structural observation, and this is the predetermined category checklist, a coding sheet we will always use for this research purpose, because structure means we have pre-decided elements, we will just fix the pre-decided, and then what category, what checklist, and what type of coding sheet the researcher will use for the observation. And the another is that the produce the quantitative and comparable data. So this is the important aspect. Example recording, how many times a student raise hand in classroom.
So how many times, how can we just mention in our data sheet? So there will be some checklist, some categories, some coding sheets. Suppose we can just cumulated frequency, we will just through cumulated frequency, we just recording the student data. So this is the kind of structure observation. When we going for the unstructured observation, this will be depends on the we can say the behavior of the researcher, and it may be some flexible, some open-ended descriptive approach. We will just follow that particular unstructured observation, and we capture the qualitative data and the particular constant context. Example, suppose I am taking the one example here, then noting general student interactions during the group discussion. So the researcher tried to just uh, noting uh, noting the general interaction during the discussion, and this will be the very good we can say sometimes unstructured observation will be very fruitful for the research per point of view. The another important observation is that natural observation and control observation. Natural and versus control means when the observation takes place in the real life setting, the real situation. Suppose the students, yeah, we can say the children playing in the Mahavir University ground, yeah, Mahavir University classroom. So we are just taking the data from that, the natural setting. So it's take place in the real life setting, minimize the artificial incident influences. So there is a very good, we can say the positiveness of this thing in natural observation comes occurs in the natural life setting, and then we can collect the data in naturally from that particular setting. So the another is control observation when we just set the experimental design, then conduct a structure experimental setting, and then that time the researchers manipulate the data, yeah, manipulate the variables on the basis of the because he just always be in a control position, and then he control the observation. Example, suppose I'm taking the example here, suppose a laboratory study, the laboratory study of memory understand under the control conditions. So this is the important that there is some control, the observation will be controlled by the researcher in that some particular, and he just taking the some experiment using the experimental design for this purpose of point of view. The another important is that because the first part was by that what is the observation, you also understand the observation, we can just say the on the there will be some participatory non-participatory observation. The second was that there is structure and non-structure observation, natural, and sometimes it is a control experimental and control type of observation. We can just conduct kind of research. But when we talking about the sampling, from where we will collect the data, that is the important question, and this is the every researcher wants to try that from where we will collect the data. But the some terminology we are using in the research, and that is the first terminology is the universe. Suppose I am just talking about the universe, sometimes we are using the population, sample frame, and sample. These four terms are very important in the research point of view when we are writing the research, when we are just exploring the research problem, identification of the research problem, and after that research problem, when we collect the data, and from where we will collect the data, that the question is that the first question is that what is the meaning of the universe. The everybody knows that universe means the we some researchers use the word universe in the place of population, and sometimes, but there is some difference between the universe and population, uh, because when we talk about the population, this is very slight different from the universe. Universe is as defined as the set of the all units which possess the variable characteristics under the study. All characteristics, yeah, all units from the universe include the all units related to variable, and then from where we are getting the data. A student of the grade 9 of merit in the context of their study habits, set all the students of the merit will be
just consider as a universe for this study. The another example is that how the population is different from the universe. Suppose a population is the entire group of individual objective events that the share common characteristics of the interest in a study. So there is a very different, very slight difference. Universe is the all set of units, but here the entire group of individuals objective events that share the common characteristics. So there is the some important aspect that the common characteristics of the interest in a study. Example, all secondary students in the Meerut city, the all patients in the hospital, yeah, we can say all teachers in the districts. So they having some common characteristics. The all students, school students, all patients, and all teachers. So these three terminologies. So we can say population is slightly different from the universe. The another very important aspect we can just thinking that the meaning of the sample, and before that the meaning of sample we are just going for the population. So population is very different. Population is we can say is refers to the set of the group of the all unit which of the finding of the research to be applied. So the population is the set of group all the units on which the finding of the research has to be applied, and on the basis of this application we generalize our research, we can say findings. The population is example if the finding if you're going for finding of the research are restricted to be applied only in the medium students of the grade 9 of Meerut city, the population will consist only Hindi medium students of the grade 9 of the Meerut city. So Hindi medium students of the grade 9 of so population consider as a Hindi medium students of the grade 9. So this is the example, the set of groups all of all units which the finding of the research are to be applied. So this is the important aspect of the for the population. But when we talking about the population size, the total number of elements a unit in the defined group, suppose it is denoted by the capital N, sometimes it may be vary, but I am here writing is the capital N population size. Example, if the school has, I'm giving you the one example here, if the any school has the 2000 students, yes, Mahavir University having the 10,000 students, yes, Bharati University having the 15,000 students, then the population size will be on according that. Here example, I am taking the one example. If the school has 2,000 students, then the population size will be the 2,000. So the 2,000 will be the population of that. But here is the, and it is not a universe because there are so many, we can say schools. But here I am taking the particular school. Yes, particular school. So N will be the 2,000. But target, what will be the target population? Because target and accessible population, there will be the two different terminology we are using in the research. The first, that target population, the entire group of the research wishes to study the all student in India. The all student in India will be the target population, but accessible the group that realistically available for the study, the student in the Meerut schools. So this is the accessible because the all entire group will of the students in India will be the target, but the accessible population where we will collect the data on the basis of the our population, accessible population. So two terms are there, the target and accessible. The another important aspect that the population, how can we just check the population? The research topic effect of the, suppose I am taking the one example here, the effect of the parenting style on the social media majority. I am just talking about the one, I have taken the one example for the research point of view. Suppose I am doing, I am conducting the research on the effect on the parenting style on the social majority. Then what will be the target population? The all secondary school students in India will be the target population. The accessible population with the, suppose I am taking the 6,000 student from the Merit school will be the population. 6,000, especially in particular class.
So accessible population will be the 6,000. Yeah, I have taken the approximately. It is not the exact, but for the research point of view, I have taken the example. The population size, the total number of secondary school students in this region, this will be the population size, and n will be the, we can say the n will be the 6,000. But when we talk about this is the nutshell, we have just described the what is the meaning of universe, what is the meaning of population, what will be the target population, what will be the accessible for target. I have just described here. But the another important aspect is that what will be the meaning of the sample, because I have checked, because from the data will be collect from the sample, and the sample simply we can say the first, before going to sample, we just, I want to describe a sample frame. The sample frame is the list of a member of the population of interest from which probability sample is select. A sample frame does not always include all members of the population of the interest. Simply, we can say the sample frame does not always include all member of the population of the interest. So it is very clear cut that sample frame is the subset of the population. Simple. It is known as the subset of the population. The sampling frame is the list from which the potential respondent are drawn from. Suppose I am just taking the some university system, the registrar office, the class register roster, and must assess sampling frame errors. So these are the important aspect for the sample frame. Sample frame is the, suppose I am taking about this thing. The another and important aspect is that if you talk about this thing, the in statistically, if you talk about this thing, so I'm going the example that in statistically, when we talk about the sample is the representative selection of the data from the larger group of population, and sample also I am just saying that it is a subset containing the characteristic of the larger population, and sample refers to a smaller manageable version of the larger group, but because it is not feasible that I can the researcher could not just take these data from the whole population, because there is some constraint, suppose time, size, and all the money problem, time problem, and so we want to result in very immediate, so we cannot we can't take the data from the large population. So we take the data from the very small sample. So sample refers to smaller, and it is a manageable version of the larger group. So another important aspect is that there are the some how can we just decide what is the sample, and there is the sampling process. Then we will select the sample. What should be the sample size for the, which will be the effective sample, and who will be the participant, and how can they responding, how can they respond to just check. So I have given here the population. There are the some large group out there. Suppose I have given here, and I have just uh, chosen the some specific groups from there, and this small thing is that this is the sample which is selected from the population. So it is a larger group. It is a, and then I have from the select the some is sample from that particular population. But what is the population of interest? That is the one question, is that is the meaning of these things. The all principal, all doctors, all engineers, all school teachers, all universities, others can be sample of the entire population. So this is known as the population of interest, and that is the important. But the important factor is that how can we, what sample size will be better for the good study. That is the important, and I have given the formula here. Suppose we have a 2000 students for our population. Suppose identify the total number of individual in target population. So many researchers just asking that what will be the correct sample size. So here, suppose if we're going for this thing. Oh, yes. Can you hear me? Yes, please. Yes, sir, we can hear you. Because, yes.
it's okay or not? Sometimes if there will be any problem, please, because I don't know whether the all members are listening or not. I think I am speaking alone. Yes. If anybody in between सर can आपकी advise. पीपीटी कोई पढ़ नहीं सकता। नहीं पढ़ सकता। आप देखो। आई थिंक हाँ यस सर, इट विल बी स्क्रीन वेरी व्यू ना बहुत स्मॉल साइज में आ रहा है। यस। आप देखिए नाउ इट इज ओके आई थिंक। तो यू कैन जस्ट आई एम जस्ट अगेन Sir, आई actually, थिंक it's creating problem for the people who are using mobiles. यस I नाउ checked myself. नहीं Yes, sir. नहीं नाउ आई थिंक आई हैव जस्ट इट विल बी ओके आई थिंक मोर आई हैव जस्ट enlarge my okay now it is okay or not. Sir, please request make it full size. We are a mobile viewer. Because I'm just thinking that सर पहले स्टार्टिंग वाला बढ़िया आ रहा था, फुल साइज आ रहा था जब I think there is a two screens I have open. This is the यस सर। now it is readable or not. सर स्टार्टिंग में ठीक था, अभी जो बैकग्राउंड आ रहा है ना वो हट पाएगा क्या? वो सेशन स्टार्ट किया था ना तब ठीक था, वो जूम आउट करने के लिए बोला था ना उस टाइम पे Okay, सर। okay, okay. तो I will स्टार्टिंग just वाले फोटोग्राफ दो जगह आ रहा है सर आपका, तो साइज छोटी हो रही है। I'm just checking it and यस okay. सर, ओके सर। Now it is okay. हाँ नहीं, इससे पहले वाला सब था ना जो अभी दबाया था जो बटन आपने कौन सा है, तो उसमें विजिबल थे फुल साइज। सर पीपीटी दोबारा से शेयर कर लीजिए, हो जाएगा। No, I'm just sharing again, sir. This is a valuable session. It is will be beneficial for us. No, it is okay or not. 1 minute, screen is going on. Process. Okay, sir. Hmm. Now it's visible, sir. पीपीटी एनलार्ज कर दीजिए जिससे कि फुल स्क्रीन हो जाए। सर बेटर देन बिफोर। Yes. Now it is okay, I think. यस सर। चलो बैकग्राउंड हट पाएगा क्या, उसकी वजह से छोटा दिख रहा है थोड़ा। नहीं ये थोड़ा this is the impossible because if I have it there then तो स्टार्टिंग ये के क्विक स्लाइड्स कर बराबर आ रहे थे। वानी सर फिर भी पहले से बहुत अच्छा है आई थिंक। now it is okay, I think. ओके सर फाइन। Okay, sir. Carry on, sir, please. I think there is some problem. Okay. Uh, so many application has been open. Okay. No, okay, sir. Okay. Okay. Now it is okay. Yes sir. यस सर। Now, Okay, sir. सर यस। yeah. Thank you.
और एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट है कि हम मोबाइलिंगुअल यूज करें तो और बेटर हो जाएगा कुछ हमारे नॉर्थ इंडियन पर्सन के लिए। हाँ yes Yes, yes because you have just I've asked in earlier, and ओके। definitely, sir, I will just try. And I'm just talking about the what sample we will just take. And here I was here, मैं यहाँ पे था, and then I will talk about this thing. Now it is visible or not? Please, sir. visible sir, okay. It is okay. Thank you. Now, I have talked about the sample size, and when we talk about the sample size, and how can we define the population size? That is the important. हमारा population size क्या होना चाहिए when जब we will just conduct the research. Suppose I have taken here example that identify the total number of individual in your target population. बिकॉज आई हैव मैंने दो पॉपुलेशन के बारे में कहा था, एक टारगेट एंड एसेसेबल। सपोज हमारे पास एक एसेसेबल टारगेट का जो टारगेट पॉपुलेशन हमने लिया, एंड देन सपोज देयर आर 2000 स्टूडेंट्स आर देयर, then first of all we decide the confidence level and margin of error, and we first decide that what we usually in social science we are using the 90% and 95% is very important, and 95% with confidence level. How sure you want to be that the result represent the population? आप कितना कॉन्फिडेंट हैं आपके रिजल्ट्स एक्यूरेटी में? आप 99% ले सकते हैं, 95 और 90%, बट mostly social science में we are taking the 95%. Margin of error 5% या 0.05 is common. The amount of error you are willing to allow. What ये आप पे डिपेंड करते हैं, it is depend on the totally depend on the researcher. So when we talk about the sample size, and there is I have given the Slovin's formula, the sample when we just how we decide the population size from the sample from the population size where it is known. So this is the formula for this. The small n is equal to capital N 1 plus divided by 1 plus n multiplied by e square, where e is the margin of error and small n is the sample size. So if we have a population, suppose I have a population, and then we will, if we'll just export this thing, then we going for this thing, then how can we calculate that? Put the all the things here in the formula, then the where the z value 1.96. If we talk about this thing, suppose we have a 2000 population, and we have decided the possible error margin of error is 0.05, then we will put this thing, the approximately 333 student we can take the population from where the population is 2000. So 333 student will be approximately we can take the sample size. But when we can say the another formula is that coherent formula we tell for the large and infinite population. So that the formula will be changed, and then this will be the formula for Z. We will just calculate the Z value and the estimated proportion of the population. Suppose again we are taking the 0.5 is known as, and E is the margin of error, and then we will take the Z value for the 95% confidence level and 1.96. So for the known population, we can use the Slovene formula. For the unknown population, because if we have no exact size of the population, and then we will use this formula. We can use this formula. So but how can we just calculate the sample size? And there is the some I have given the some link that you can calculate is a online mode also. A standard -insight.com and tool /sample size calculator. Then this is the online. Suppose you have then you directly calculate. So we can take the help from the online through.
But now I'm taking that what sample we will take and how can we just what methodology we will just. So I have discussed about the universe. हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया। देन एंड वी हैव डिसाइडेड दैट कि एक पॉपुलेशन से सैंपल का साइज क्या होना चाहिए। देन वी हैव टॉक अबाउट द टू फार्मूला हियर, क्वेश्चन फार्मूला एंड स्लेवन फार्मूलाज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सैंपल कि अब जो तीसरा हमारा है कि व्हेन वी डिसाइड द व्हाट विल बी द सैंपल, देन व्हाट मेथड वी विल अडॉप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल, देन वी विल जस्ट गो फॉर दिस थिंग। देन here is very important that sample is the study population and the another will be the target population. The study population and target population will be very big, then study population will be small, and from the study population we will collect the we will just select the sample from the specific methods. And there are so many methods sample को select करने के, there are so many methods या techniques we can use. एंड यहाँ पे हम इन टेक्निक को हम टू भागों में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम पहले करते हैं प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स एंड सेकंड विल बी द नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। सो व्हेन वी डिसाइड कि सैंपल साइज क्या होगा, लेकिन फ्रॉम वेयर विल कलेक्ट एंड व्हाट मेथड वी विल अप्लाई फॉर द selection of the sample, then first we will go for the probability. And as you name, you know that the probability means some probability of the scheme is the one on which the every unit, प्रत्येक एक जो यूनिट होगा सैंपल का उसको सिलेक्शन का एक चांस है being a selected in the sample, and this probability can be accurately determined. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स ऐसी प्रोबेबिलिटी कि एवरी जो यूनिट होगा सिंगल सिलेक्शन का दैट कैन बी वी कैन दैट हैव ए चांस टू that has a chance to select in as a being a sample. So when we every element in the population does have the same probability of selection, this is known as the equal probability of selection, EPS design. Such design is also referred to as a self-weighing because all sample units are given the same weight. Those same weight means same weight. So there is a terminology we'll use having the EPS means equal probability, सबको बराबर का चांस है सेलेक्ट होने का. So it is known as the probability sampling method. There are so many probability sampling method, and I have given here the some example. Suppose there are the four type of probability sampling designs. First is the simple random sampling, second is stratified sampling, systematic sampling, and cluster sampling. We can use the four methods, and from we can understand everything here from each one. And the first is the simple random sampling method. I have given the some population here, and there are the 15. I have given the 15 units here, 1 2 3 4 5. अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ रैंडम सैम्पलिंग के कुछ पॉपुलेशन है, लेकिन हमने क्या करा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अगर हम देखें इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे तो वी हैव टेकन कि हमने 2 को लिया, देन वी हैव जस्ट टेकन द रैंडम 5 9 13 and 14. We pick the simple randoming, and how can we just 2 5 9 and then 13 and 14. This is the simple I have selected from the population design. But when we talk, this is the randomly we have selected. We can use the some lottery method, some we can say हम इनका पर्ची बना के रख सकते हैं, लॉटरी मेथड बना सकते हैं, कुछ भी आप चूज करें, लेकिन हमने रैंडमली सेलेक्ट किया. सिंपल रैंडम इज द. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात करते हैं, पॉपुलेशन से अगर सैंपल लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट पॉपुलेशन की जो यूनिट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, देन हमने उनको स्टाटा में डिवाइड करना है कि सपोज इकोनॉमिक लेवल हो सकता है, देयर इज द काइंड ऑफ जेंडर हो सकता है, काइंड ऑफ ओकेशंस हो सकते हैं. तो देयर आर आई हैव टेकन लेयर 4 ईयर वी हैव जस्ट डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट कलेक्ट हमने डिफरेंट कलर्स से हमने यहाँ पे शो किया है. And green, blue, and this is the group of the people who group of the individuals here. We can say sample. Then we have just framing these things strata, and then
from each strata, then we'll select the random selection, and then from the randomly select, we can just select the from the each group. Then from each group, I have to select the 4 units from each group, and then this is not the strata. Strata means there are the different kind of layers are there in a heterogeneous sampling. सो जब हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो तो हम स्ट्राटिफाइड मीन्स अलग अलग लेवल से हम स्ट्राटिक मीन्स सम लेवल्स या वी कैन से सम एक स्तर जिसको कहेंगे देन वी कैन जस्ट टेक द रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम एवरी strata, and then on the basis of that, then we can just again we are using the simple random sampling method for this. But first, here is a add with one another add-on here, but we divided the sum stratified some strata here. The another is that systematical random sampling method. Systematically means we can decide that in every second. Suppose I am taking the population here, and in case the every second person of systematically selected here, here are the 10. We have just given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. Suppose I am taking the every second, the 2, 4, 6, 8, and 10. So systematically, I have selecting these samples from the population. So this is known as the systematical sampling method uh, of sample selection. Now, the another is that suppose there are some heterogeneous group and there are so many groups divided in our population, and they having the group having the similar characteristics. Suppose there are the 5 groups are here, and they having the similar kind of characteristics. The one group having so these the group characteristic is known that the simple correct same character is known the clusters. So we have decided that these clusters. So on the basis of cluster, then when we take the sample from the different kind of cluster, then this known as the cluster sampling method. So this is the how can we just check this in every cluster we will take the sample. Yeah, every group we cannot possible to, but if they having the similar character, then we'll take the any one from that particular cluster. So we will divide the first of all the same characteristic in the same clusters, and then on the basis of the same then we check तब हम उनमें से कुछ डेटा को ले सकते हैं. अब एक तो ये हुआ कि हमने नॉन ये प्रोबेबिलिटी सैंपल्स है कि जहाँ पे हमने 4 टाइप ऑफ सैंपल्स की सैम्पलिंग टेक्निक डिज़ाइन की बात की कि ये जो सिंपल रैंडम है या रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक है या क्लस्टर सैम्पलिंग है, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के सिलेक्शन का चांसेस है. सो दीज आर दीज 4 जस्ट नोन एज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. बट कई कई बार ये होता है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती है. सपोज रिसर्चर के पास वी हैव नो एनी चॉइस टू कि हम रेंडमली सेलेक्ट करें और हमारी चॉइस खत्म हो जाती है, तो हम या हम कहीं भी ये होता है कि हमें यही लेना है. सपोज कि हमारी चॉइस है कि हमें किसी पर्टिकुलर को लेना है और दूसरे को हम छोड़ देते हैं, तो उस केस में देयर आर द अनदर टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज द नॉन प्रोबेबिलिटी. मीन्स किसी के चांस की प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं कि 100% इक्वल चांस मिले. So there are the 4 type of probability sampling: convince sampling, purposing, and quota and snowball sampling. Suppose we are talking about the convince type of sampling. So convince अगर हम करें, then we take about the non probability का अगर हम बात करें तो सबसे पहला था कन्विंस करना है. कन्वीनियंट मीन्स जो आप एज ए रिसर्चर इफ यू आर जस्ट सेलेक्टिंग द सैंपल जो आपके अधिकार क्षेत्र में है या जिसको हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल है, देन वी कैन जस्ट हमें रिसर्चर जो रिसर्चर चाह रहा है कि उसी को सैंपल एज ए मेरठ डिस्ट्रिक्ट का है तो उसने कह दिया कि आई विल जस्ट सेलेक्ट द मेजर डिस्ट्रिक्ट मेरठ, जबकि यूपी में देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स और हम अक्सर अगर इन सपोज वी आर लिविंग इन द मेरठ तो हम ही कहते हैं कि हम मेरठ डिस्ट्रिक्ट से ही सैंपल लेंगे. सो कन्वीनियंस हो गया कि हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कन्वीनियंस. तो कन्विंस सैम्पलिंग है, दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी. हमने अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस फिगर हियर,
अगर हम देखें तो हमने वो अपने नज़दीक के 4 ले लिए हैं, 5 जो चूज किए हैं कि वो बहुत दूर के हैं हमने ले लिए। सो दिस इज नोन एज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि जो जिसमें कन्वीनियंट हो, जिसमें इजी हो, जो मेथड ऐसा हो। तो वहाँ पे ये होता है कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, इट इज़ नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, बट समटाइम्स ड्यू टू द सम लैक ऑफ टाइमिंग, अगर कहीं पे है मैथोलॉजी या मनी की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, समटाइम्स वी कैन टेक this type of sample, but this is also the method of sampling technique. The another is that अगर हम दूसरे पे कहेंगे कि पर्पजिव सैम्पलिंग की बात करते हैं, पर्पज पर्पजफुली, मैंने जब हम एक डिसाइड करते हैं कि व्हाट पर्पज, अगर सपोज वी आर डूइंग द रिसर्च ऑन द, वी जस्ट टेक द IQS परसेप्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं उनसे हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का परसेप्शन के बारे में पूछना है, देन हाउ कैन वी जस्ट गेट द सैम्पल, एंड देन वो पर्पजली होगा कि हमारा जो टारगेट होगा कि वी विल टेक द ओनली दोज की हम केवल प्रिंसिपल से ही लेंगे, तो वो पर्पजफुली होगा। या हमने पर्पजफुली हमने गए कि किसी पे, सपोज हमें अपनी रिसर्च, सपोज आई एम डूइंग माई रिसर्च केवल MD लेने, जो जिनके पास MD होगा, तो हमारे पास सैंपल बहुत छोटा है तो हम कह रहे हैं कि MD ही लेने हैं। पर्पजली हमने कह दिया कि ओनली MD जो भी अवेलेबल होगा उसी से हम सैंपल लेंगे। तो पर्पजली वी आर जस्ट गोइंग टू, कि वहाँ पे हमारे ऑलरेडी रिलेशंस हैं, या वी कैन ईजिली अवेलेबल हैं, या हमने देख लिया कि ये आसानी से डाटा मिल सकता है। तो पर्पजली वी आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ, पर्पज मीन्स रिसर्चर का पर्पज होगा, वो पर्पजली इसको लेगा। देन वी कैन सेलेक्ट द सैंपल पर्पजली, वो हमारे रिसर्च के पर्पज को भी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको फिलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्पज सैम्पलिंग। या दिस इज द नॉन, बट यहाँ पे भी वही आ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी, चांस सबके नहीं है, सारे प्रिंसिपल नहीं आ सकते जिसको हम जानते हैं, जिससे हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्चर माइंडसेट, रिसर्चर पे डिपेंड कर रहा है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। द अनदर इंपॉर्टेंट इज दैट स्नो बॉल सैम्पलिंग। अब जब सैम्पलिंग का एक मेथड आता है, अगर आप देखें नाम ही उसका स्नो बॉल है, सपोज हम बॉल को थ्रो करेंगे, दूसरी की तरफ जाएंगे, और फिर उसके पास कुछ नहीं होगा, आगे स्नो पिघल जाएगी, फिर उसने किसी और को दिया, सिंपली वी कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस। हमने सपोज आई एम टेकिंग द सम टिपिकल, वेरी टिपिकल सैंपल, और हमें ऐसे चाहिए कि सपोज आई एम डूइंग माय रिसर्च, कि ऐसे पेशेंट पे करना चाह रहे हैं रिसर्च, और उसका IQ लेवल देखना है, सपोज कि जिसको अभी कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना के बाद उसको कोई मेडिसिन दी, कोरोना के बाद मेडिसिन देने के बाद उसके उसका अब कैसा उसका ब्लड प्रेशर है उसको चेक करना चाह रहे हैं, सपोज वी आर जस्ट चेकिंग दिस थिंग। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो पेशेंट कहाँ मिलेगा ऐसा, कि जिसको कोई, या तो उसको कोरोना के बीच में कोई मेडिसिन लगी और वो हॉस्पिटलाइज रहा और वो वापस आ गया, तो ऐसे पेशेंट को देखने के लिए हमें फिर, हमने एक के पास गए, देन उसी ने रेफर कर लिया कि भाई दूसरा, या डॉक्टर ने रेफर कर लिया किसी दूसरे तीसरे को कि हाँ ऐसा जो कंडीशन थी उसकी भी थी। सो रेफरल, दिस इज द काइंड ऑफ रेफरल सैम्पलिंग, कि हम, हमें पता नहीं कि कौन हमें कोई रेफर कर देगा उस चीज़ को। देन यहाँ पे थोड़ा सा एक सैम्पलिंग ऐसे हो जाती है कि हम ये देखते हैं कि जब व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू कलेक्ट द डाटा, कि हम किसी के पास जाएंगे, देन वी विल डिसाइड दैट कि वहाँ पे क्या होगा। देन हमने उनसे डाटा लिया किसी एक से, सपोज कोई वी कैन से डिसेबल है सपोज, एंड देन we are just going to collect the data from that, and then we have just checked the this thing that हाँ जी इस तरह का कोई हमें पेशेंट दूसरा भी है कि नहीं, या उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जस्ट एडवाइज कि हाँ जी वहाँ पे इस तरह का पेशेंट्स हैं, या उस हॉस्पिटल में इस तरह से, या किसी पर्टिकुलर स्कूल्स में इस तरह की जो रिमीडियल क्लासेस चलती है, स्पेशली स्पेशल जो डिसेबल हैं, या सपोज स्पेशल स्कूल्स हैं, देन वी कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरल एक्टिविटी। तो जहाँ पे सैंपल मिलना टफ है, तो हम उसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि सर हमें प्लीज टेल मी अबाउट दिस थिंग, कि हु विल बी द फ्रॉम वेयर वी विल कलेक्ट द डाटा। सो at the particular moment we don't have any
काइंड ऑफ डाटा, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें कोई सैंपल यूनिट मिलती है, देन वो रेफर कर रहा है कि यस आप जाइए आगे जाइए, देन आप डिसाइड कर दें। यहाँ पे देखो, सपोज रिसर्चर इज जस्ट वांट टू ट्राई, उसको केवल 2 ही सैंपल पता है, लेकिन दोनों के बाद दोनों ने रिफर कर लिया कि देयर आर द 3 4 अदर पीपल्स आर देयर, देन ऑन द बेसिस ऑफ 3 देन आई हैव सेलेक्ट वन, देन वो एक रेफर कर रहा है। तो दिस इज नोन एज द स्नो बैल सैम्पलिंग, जहाँ एक के बाद एक रेफर हो रहा है, हमें पता लग रहा है यस ओके, तो सेम कंडीशन इज दैट, एंड देन वी सेलेक्ट द डाटा, वी कलेक्ट द डाटा, सामने सेलेक्ट सैंपल किया फिर कलेक्ट कर लिया सैंपल। सो दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। Now, I am moving that. The another is that I think if there are any having any questions, हम बीच में भी ले सकते हैं या लास्ट में लेना है, इट्स डिपेंड ऑन द दिस थिंग। बट स्नो बॉल सैम्पलिंग के साथ साथ कोटा सैम्पलिंग है, परपजीव सैम्पलिंग है, ये चीज़ें दीज आर द ऑल आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट समटाइम्स ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं रिसर्चर को। बट व्हेन वी यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जब हम स्टैटिकल एनालिसिस या मैथोलॉजी भी चेंज हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हम ये कह सकते हैं कि दीज आर नॉट फॉलोइंग द नॉन प्रोबेबिलिटीज, एंड we can say the non parametric test we can use, and sometimes the another test we can use for this purpose of view. now आता है कि भाई ये तो ठीक है कि हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया था शुरू में, देन वी हैड टॉक अबाउट द सम टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, देन पॉपुलेशन इन्वर्स की बात की, देन सैंपल की बात की। लेकिन एक हमारा इम्पॉर्टेंट जो थर्ड और लास्ट आज का लेक्चर का है, वो है कि इंटरव्यूज इज इम्पॉर्टेंट। एंड इंटरव्यू जब हम कहीं पे बहुत बार ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, देन हाउ कैन वी जस्ट चेक द व्हाट इज द, हाउ कैन वी टेक द इंटरव्यू फ्रॉम फ्रॉम आवर पर्पज और पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि बहुत से रिसर्चर ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू, लेकिन everybody knows that what is the interview, and the interview is conducted via the digital communication platform instead of face meeting, सामने आमने सामने बैठ के। एंड sometimes I am today I am just using the digital platform, digital communication, but it is not a kind of interview। हम मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग हो रही है, एंड देन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर होगा, देन वी कैन यूज द ऑडियो वीडियो टेक्स्ट बेस्ड टूल्स फॉर द पर्पज ऑफ द डाटा गैदरिंग पर्पज। जब हम रिसर्च ये इंटरव्यू इस तरह से समझ लीजिए कि डाटा गैदरिंग में एक टूल है इंटरव्यू, एंड देन हाउ कैन वी यूज द इंटरव्यू फॉर द डाटा कलेक्शन प्रोसीजर इन द रिसर्च। तो रिसर्च में अब ये एक्चुअली रिसर्च में बड़ा पॉपुलर आज की डेट में है, और रिसर्च में तो हो ही है, साथ में रिक्रूटमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यूज। इवन द आप देखते हैं चाहे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, तो विदाउट इंटरव्यू लास्ट फेज ऑफ इंटरव्यू होगा, और लास्ट फेज में इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि भी ठीक है कि नहीं, तो हम वहाँ पे भी चेक करते हैं बिहेवियर वगैरह। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च पर्पज वो में करेंगे, तो आज बहुत पॉपुलर इंटरव्यूज होते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी जस्ट एक्सप्लोर द फाइंडिंग या न्यू फैक्ट्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये आता है कि प्लेटफॉर्म इंटरव्यूज के क्या क्या हो सकते हैं। देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। मुझे शायद उन्होंने 3:30 तक का टाइम दिया था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर से होगा सेशन, देन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द इंटरव्यूज। सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा टाइम ले ले ओके सकते ओके हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक Okay, यू। platform for the e-interviews. I want to just talk with the some participant na, because this is will be the some question answer will be there, then it will be more interactive. Yes sir. And first of all I will finish it. Yes. ओके, ओके सर। Okay. Yes sir. Platform for the e-interviews, and हम कहते हैं कि इंटरव्यूज का क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आज की डेट में जैसे आज प्लेटफॉर्म है, द महावीर यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग द वेरी गुड प्लेटफॉर्म हियर, एंड दैट इज नोन एज द जूम। तो जूम प्लेटफॉर्म है, देयर आर अदर इज दैट गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्काइप है, और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वी कैन जस्ट टेक द सम इंटरव्यूज, एंड रिसर्चर
भी कर सकता है अपने। जब हम स्ट्रक्चर इंटरव्यूज की बात करते हैं, हमारे पास फिक्स है क्वेश्चंस, देन वी कैन टेक द इंटरव्यूज एंड देन वी रिकॉर्डेड दीज इंटरव्यूज एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू वी कैन जस्ट take the perception of the some students, perception of the stakeholder, yeah, from our sample. Yes. दूसरा है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, एंड एवरीबडी नोज दैट व्हाट आर द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। व्हाट्सअप मैसेज, सर ने मुझे मैसेज भेजा था, देन लिंक भेजा था, देन टेलीग्राम है, मैसेंजर्स, देयर आर सम प्लेटफॉर्म ऑफ द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। तो वी कैन टेक द इंटरव्यूज थ्रू द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऑन द व्हाट्सअप ऐप। Email based interviews is the change of structure and structure questions, and we will send the questionnaire and then we take the some interviews on the basis of this structure and structure questions. Specialized to quadratics, survey monkey, and if you took the mixed interviews plus survey, सो सर्वे में भी हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट सम क्वाड्रिलेट्रिक्स एंड सर्वे मंकी, इफ यू डाउन दीज थिंग देयर आर द सम ऑन ई इंटरव्यूज फ्रॉम प्लेटफॉर्म पे हम जब ले सकते हैं तो ई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द नाउ वी आर जस्ट इन ए डिजिटल एरा में हम जब रह रहे हैं, तो रिसर्चर का ये हो जाता है कि भाई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वी कैन जस्ट अरेंज दीज इंटरव्यूज विद हेल्प ऑफ द सम by using the some specialized tool, and वो क्वार्टरली के है, सर्वे मंकी है या अनदर टूल्स है। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर आर द व्हाट टाइप ऑफ ई इंटरव्यूज, जैसे हमने पहले कहा कि सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज मीन्स व्हेन वी टेक द इंटरव्यू इन रियल टाइम। अगर हमें देखें कि रियल टाइम में सपोज आप ऑनलाइन बैठे हैं एंड देन लाइव वीडियोस, लाइव ऑडियो सेशन चल रहे हैं, देन दिस इज नोन एज द ई इंटरव्यूज। अलाउ इंटरेक्शन एंड प्रॉबिंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज होगा, तो इंटरव्यूअर विल टेक द सम आस्किंग द सम क्वेश्चंस, एंड देन द आंसर, उसका आंसर जो जो इंटरव्यू लिया जाएगा, जिससे हमने कलेक्शन करना है डाटा, देन वो ही विल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन वो अपना डाटा प्रोवाइड करेगा थ्रू इंटरव्यू पर्पस। लेकिन सिंक्रोनाइज मीन्स रियल टाइम, जहाँ पे दोनों है, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइव ऑडियो एंड वीडियो चल रहा है जहाँ पे, देन दिस इज नोन एज द सिंक्रोनाइज रियल टाइम इंटरव्यूज। दूसरा है डिलेड मीन्स वी हैव जस्ट सेंड एन ईमेल and then we just responding, then we take the some recorded responses. So this is the but here is some lack of spontaneity, थोड़ा सा वैलिडिटी की चांसेस नहीं होता, मैनिपुलेशन की ज़्यादा जरूरत होती है। फेस टू फेस ज़्यादा अच्छा होता अगर हम देखें, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल है, सपोज हम फेस टू फेस लेते हैं तो वो इंटरव्यू ज़्यादा होता है। यस, मैंने समटाइम्स ही जस्ट रियल टाइम में रियल डाटा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। So email recorded and response is more flexible but lack of spontaneity. So this is the kind of another kind of this thing. The another is that the data collection tool. There are so many data collection tools are there. Instrument या methods used by the researcher to gather the information from the participant. एंड उनमें जो डाटा कलेक्शन टूल में जब हम बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी डाटा कलेक्शन टूल, लेकिन डाटा कलेक्शन टूल में हमें कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वी विल फोकस ऑन दिस एंड दिस इज द एसेंशियल क्वालिटी एंड सपोज कि एक्यूरेसी, डाटा जो हमारे पास रिसीव हो एक्यूरेट होना चाहिए। देन सेकेंड इज दैट रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ डाटा इज इम्पॉर्टेंट। सो रिलायबिलिटी मीन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। अगर हमने एक बार पूछा तो वही आंसर आ रहा है, दूसरी बार भी वही आ रहा है। एंड द सेकंड इज द वैलिडिटी मीन्स द पर्पज ऑफ द डाटा। सपोज आई एम टेकिंग द पर्सनैलिटी ट्रेड्स, हम किसी के बारे में हम पर्सनैलिटी ट्रेड चेक कर रहे हैं, वेदर द पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में ही हो ये डाटा अवेलेबल हो रहा है, कुछ और को मेजर कर रहा है, एटीट्यूड को मेजर कर रहा है। So, so the validity of data is related to purpose and reliability is consistency of the data of the result या consistency of the responses. So यहाँ पे तीन चीजें accuracy, reliability and validity are the important, और ये मैंने रिसर्चर को हमेशा अपने माइंडसेट में रखना चाहिए कि हम इन डाटा को एक्यूरेट करें। एंड डाटा को देखो, जब हम डाटा कलेक्शन टूल की बात करते हैं तो डाटा कलेक्शन में भी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड है।
सो क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा एंड मिक्स मेथड अप्रोच को जब हम करते हैं, देयर आर सो मेनी टूल्स वी कैन जस्ट गैदर फ्रॉम हियर एंड द व्हेन वी टॉक अबाउट द ई इंटरव्यूज में, तो ये इन टूल का आदत है। लेकिन ई इंटरव्यूज में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम डाटा टूल्स को लेते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आए, हम सिंक्रोनाइज करें, उस टूल्स को यूज करें एंड वो टूल में वैलिडिटी हो, वो हमारे क्वेश्चंस एक्यूरेट हो, और ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू या जब हम पहले से कर लेते हैं। लेकिन जब हम ई इंटरव्यूज की बात करते हैं तो उसमें एक आता है कि इथिकल कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट। आज की डेट में जो बहुत बड़ा एक इशू हो रहा है, दैट इज द इथिकल इंटीग्रेशन एंड इवन द इफ द गुड पेपर, इफ देयर इज विद सम पेपर, अगर कहीं पे हम पेपर पब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो देयर विल बी द सम प्रॉब्लम कि हम ई इथिकल कंसिडरेशन लेते हैं कि नहीं। मीन्स हम उससे एक परमिशन जरूर लें कि आई हैव नो एनी प्रॉब्लम टू प्रोवाइड दिस डाटा, द डिजिटल सिग्नेचर या रिकॉर्डेड कंसेंट, informed consent, yes, you are agreeable to provide these data. So this is the ethical consideration and informed this digital signature, recorded consent. The second is data security and privacy is important. Encrypted platforms preferred. So data security and privacy, because if रिसर्च के लिए कोई डाटा किया जा रहा है देन उसको अगर पब्लिक में ले लिया जाए तो दिस इज द अनइथिकल इश्यूज। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, आप टू टेक द इंटरव्यू, उसको आपको जब तक उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, यदि उसका डाटा एनालिसिस नहीं हुआ या उसको कोडिंग करना, उसको डिकोड करना, इट्स डिपेंड ऑन द रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सारी एथिकल कंसिडरेशन में आएगा। द अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हमने रिसर्च ले लिया है, हमने पेपर पब्लिश कर दिया और वहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई ये डाटा है, वेदर इट इज ट्रू या नॉट। समटाइम्स द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा इज इम्पॉर्टेंट एंड कई बार ये होता है कि हम कोडिंग में ले लेते हैं, तो जो उसका सपोज कोई पेशेंट का डाटा है, किसी का अपना प्राइवेट मैंने इम्पोर्टेंट डाटा है, तो सो देयर इज ए इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इसको कहा गया कि इथिकल कंसिडरेशन लेना बहुत, एंड रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट एंड टाइम एंड कंफर्ट। क्योंकि सपोज आई एम टेकिंग अबाउट द कि हम कभी हरीड में चले जाए यार, हम कह चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट आज ही हमें डाटा दे दे, लेकिन ही इज नॉट एग्री टू टेक, ही इज नॉट एग्री कि उसके पास टाइम नहीं है, ही इज नॉट इन कंफर्ट जोन, तो हमारे डाटा की वैलिडिटी बहुत कम होगा, उसकी मैंने वैलिडिटी जो पर्पस है डाटा का, उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग द एथिकल कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट टू टेक द एनी इंटरव्यूज या एनी डाटा फ्रॉम द एनी सोर्सेज। तो जो भी सोर्स होगा, जो जहाँ से भी हमने डाटा कलेक्ट करना है, तो इथिकल कंसिडरेशन उस यूनिट से या सैंपल यूनिट से आपको जरूर उसमें इथिकल कंसिडरेशन जरूर है, और उसका एक्चुअली व्हेन वी जस्ट पब्लिश योर पेपर देन उस वहाँ पे भी एक इथिकल कंसिडरेशन होता है कि यस आई हैव टेकन द डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट आई हैव बिफोर दैट आई हैव जस्ट उससे हमने एक कंसेंट ले ली थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द रिसर्च। लेकिन जब हम आगे चलते हैं कि सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शंस में जब हम बात करते हैं कि इंटरव्यूज का आता है, इथिकल कंसिडरेशन आ गई डाटा कलेक्शन, चाहे इंटरव्यूज में हो चाहे डाटा कलेक्शन में। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल्स, देयर आर सम क्वांटिटेटिव, जैसे क्वेश्चन आयर है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट वो क्वेश्चन आयर कि हम सर्वे में कर रहे हैं, क्वेश्चन आयर में कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज, ऑफन क्लोज एंडेड, लार्ज सैंपल, स्टैटिकल एनालिसिस पॉसिबल। सो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन पहले तो हमें कहते हैं क्वेश्चन व्हाई विल यूज द क्वेश्चन। भाई आपको पता ही है कि चाहे वो स्ट्रक्चर होनी है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म बने, सपोज वी हैव सेट आउट 50 क्वेश्चंस, वो वाकई उस चीज को मेजर कर रहे हैं कि नहीं। और क्वेश्चनर क्या है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी है या सब्जेक्टिविटी आएगी, या ऑब्जेक्टिविटी आएगी, दिस इज द इम्पोर्टेंट। वो वैलिड है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, उसमें इतनी वो है कि अगर हम एक क्वेश्चंस को दूसरे से के साथ मैच कर रहे हैं, क्या उनमें डिफरेंस है कि नहीं, या सेम चीज है कि कोई दो क्वेश्चन सेम चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, दैट इज द सो आफ्टर गोइंग द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। स्टैंडर्डाइज समटाइम्स वी आर जस्ट गोइंग, हम एक चीज बहुत बड़ी बात करते हैं कि एक्चुअली जब हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में जाते हैं
तो मोस्टली वी आर नॉट टेकिंग द डाटा इन ए, जो सैंपल होता है, या जब हम उसको डिसाइड करते हैं तो हम एक बहुत ही छोटे सैंपल पे हम इसको वो कर लेते हैं, डिफाइन करते हैं, देन दैट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. सो यस सर. हेलो. जय हिंद. जय हिंद सर. हेलो. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जी सर। यस यस प्लीज. मैं मुझे लगा कि मैं ही बोल रहा हूँ केवल. नहीं नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके ओके. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक जी। यू. माई स्क्रीन ठीक है ना, दिख रही है? यस सर विजिबल। ओके ओके. थैंक यू. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सम क्वालिटेटिव एंड क्वेश्चनर पे बात कर रहा हूँ, तो लार्ज सैंपल है कि नहीं. द अनदर इज दैट द टेस्ट एंड स्किल, एंड देयर आर द सो मेनी टेस्ट एंड yes. The yes, are you listening? I think there is some problem. Data, yes. यस सर, आवाज आ रही Then, okay, okay, okay. Thank you, thank you. Yes. Then I am talking about the qualitative data collection and questionnaires. मैं structure. I am not just going the deeply on the questionnaire. हम उसके बिल्कुल डीपली नहीं जा रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चनर में, तो व्हेन हमारा एक तो सैंपल व्हेन बहुत लार्ज हो, एंड देन वी कैन यूज द क्वेश्चनर कि इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो सकता दैट टाइम, एंड देन वी कैन नॉट टेक द इंटरव्यू फॉर दैट पर्पज. द अनदर इम्पॉर्टेंट इज दैट देन वी यूज द टेस्ट एंड स्किल्स. तो एक क्वेश्चनर का एक सबसे बड़ा पॉजिटिवनेस ये होता है कि लार्ज सैंपल हो तो हम एक क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सेम टाइम में नंबर ऑफ जो रिस्पोंडेंट हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं, एंड देन on the basis of that statistical analysis is possible. And the second is the test and skills. Suppose we are just using the rating scale tool. Suppose aptitude check करना है, attitude check करना है, academic test, there are so many academic tests, achievement test we can use, and skills, psychological skills, रेटिंग स्किल्स हम यूज करते हैं पर्सनैलिटी को चेक करने में या एटीट्यूड को चेक करने में. 5 पॉइंट, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, 9 पॉइंट रेटिंग स्केल. तो जहाँ पे हम ये यूज करते हैं, देन वी कैन यूज दीज टेस्ट. द अनदर इज दैट स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन. मैंने पहले ही इसको शुरू में स्टार्ट किया था कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव डाटा टूल में, तो ऑब्जर्वेशन जो है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, प्री डिफाइंड कैटेगरी फॉर द सिस्टमेटिकल रिकॉर्डिंग. तो ऑब्जर्वेशंस इथनोग्राफिक में, जब हम इथनोग्राफिकल इथनो टाइप के रिसर्च करते हैं, सपोज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिसर्च करना है, तो वहाँ पे हम जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे. बट बिफोर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सपोज वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, सपोज हमारी कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो प्री डिफाइंड है, तो हम उन ऑब्जेक्टिव को लेके एक स्ट्रक्चर टूल बना के देन वी कैन जस्ट रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन टू बी ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. हम उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट होके देन वी कैन रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू द चेकलिस्ट. तो इथनोग्राफिक टाइप ऑफ रिसर्च जब हम करते हैं, तो देन वी कैन यूज दिस थिंग. देन जब हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं, सेकेंडरी डाटा, हाउ कैन वी जस्ट यूज द सेकेंडरी, चाहे वी टेक द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सम सेंसस डाटा, सम पॉलिसीज डाटा, सम वी आर यूजिंग द सम डेटाबेस. तो ये सारी चीज़ें व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी डाटा सोर्सेज,
कि हमारे रिकॉर्ड्स हैं, कहीं पे हम लाइब्रेरी से ले रहे हैं, कहीं पे पॉलिसी रिकॉर्ड्स हैं, कहीं पे रिसर्च थीसिस हैं, उनसे सेकेंडरी डाटा हम ले रहे हैं। सपोज हम प्राइमरी यूज सोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हैं, then we can use the qualitative data collection tools, then we can use these things. And the another important aspect to just check these things कि क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे कलेक्शन टूल्स के, जैसे हम इंटरव्यू में ले रहे हैं, तो इंटरव्यू में भी हमारे पास फेस टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यूज में स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज का हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। देन वी कैन यूज द स्ट्रक्चर इंटरव्यू, जहाँ सारे क्वेश्चंस फ्रेम पहले कर लेते हैं। सेमी मीन्स व्हेन वी जस्ट चेंज द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ माइंडसेट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। तो जो वहाँ पे वो सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर मीन्स हम चले गए एंड देन वी आर टेकिंग द ऑन द रैंडमली वी आर जस्ट टेकिंग द डाटा, या हम रैंडमली आस्क कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि व्हेन वी टेकिंग द कई हम इंटरव्यूज कर रहे हैं एंड देन तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। सपोज वी आर आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू अक्सर जब रिक्रूटमेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू लेके जाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस they have asked from the interviewers. So इंटरव्यूज इज ए, चाहे वो हो स्ट्रक्चर हो सेमी स्ट्रक्चर हो, तो हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू विल बी एज ए टूल। when then we focus group, the group discussion together the collective insights. सपोज हम कहीं भी कह रहे हैं कि एक ग्रुप है, सपोज उनके बीच क्या डिस्कशन हो रहा है, देन वी कैन टेक द ओपिनियन ऑफ दैट ग्रुप। सो दिस इज ऑल्सो द ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन। वी कैन यूज द एज ए डाटा कलेक्शन, उनका जो डिस्कशन का जो एक वी कैन से समरी आएगी, देन वी कैन दिस विल बी द इनसाइट फॉर द रिसर्चर। Then unstructured observation, natural recording of the behavior event. This is the unstructured because we are just doing the record and then on the basis of recording, then we can just finalize our then हम उसके बारे में उन रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम बिहेवियर एंड इवेंट्स को चेक कर रहे हैं, देन अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। देन डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट एनालिसिस, सपोज वी आर जस्ट टेकिंग the books, the articles, the diaries, then we can go for the media, the archive, just we can go for the journals, and then we can, on the basis of these things, we can just analyze the content. Then these are the data collection tools. Suppose I am taking the some, हम reviews लिखना चाह रहे हैं किसी book का, then we can go for the books. Suppose we are just searching so many articles and then on the basis of the articles we can use these articles as a tool and different articles and review writing the articles and books and diaries. Suppose I am taking the diaries, we suppose I am talking the विवेकानंद ने क्या लिखा अपनी डायरी में, देन वी चेक, देन वी कैन, ये टूल्स होंगे जो, देन दिस विल बी द डायरी इज ऑल्सो द क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल। एंड द मीडिया में जो क्लिप्स हैं उनका मीडिया का जो देखेंगे, उनकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करेंगे, द मीडिया इट इज़ ओके या नॉट, या कोई मतलब मैनिपुलेटेड तो नहीं है, एडिटेड तो नहीं है, देन हम वी आर चेकिंग दीज टूल्स। एंड archives, मैंने there are so many archive sources are available. So this is the now we are just going with the mixed method, and mixed method data collection is very important today now कि हम भाई मिक्स, ऐसा नहीं कि वी गो फॉर द क्वालिटेटिव या वी गो फॉर द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, हम किसी एक मेथड को नहीं ले सकते। बट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव इन, सपोज आई एम टेकिंग द सर्वे इज क्वांटिटेटिव। हम जब भी लेते हैं तो सर्वे क्यों किया जाता है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को किसी जगह पे जानने के लिए हम सर्वे मेथड यूज करते हैं। Then the second is the follow-up interviews and qualitative follow-up interviews and qualitative. The second is the observation checklist, open-ended field node. We can do these are the quantitative plus qualitative methods, and the another is provide the triangulation methods. Cross verification of the finding. Triangulation is important and cross verification of the findings. हम डाटा को पहले हम ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास क्या है, सिचुएशंस को देख लेते हैं, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन डाटा की जो ऑब्जर्वेशन है कि व्हाट विल बी द फाइंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग देन वी जस्ट
हम एक थ्योरी थ्योरी उसका कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. सो I think you understand this thing, but how can we choose the right tool? That is the important. हमें चाहे सैंपल का हमने ले लिया, सैंपल के बाद हम टूल में आ रहे हैं, चाहे क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मेथड है, हम टूल को हम चाहे हम क्वेश्चन आयर लें, चाहे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल लें, चाहे इंटरव्यू करें, चाहे सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी टूल हम यूज़ करें, लेकिन देयर आर द सम फैक्टर्स टू चूजिंग द राइट टूल. एंड पहले फर्स्ट नेचर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज द आवर प्रॉब्लम, हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, व्हाट शुड बी, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज दियर, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है या ये मिक्स मेथड को फॉलो कर रही है. दैट इज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. रिसर्च प्रॉब्लम के साथ ऑब्जेक्टिव जब हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को कंसिडर कर लेंगे, देन वी कैन जस्ट चेक दिस थिंग. द अनदर इज दैट पॉपुलेशन सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज वी आर यूजिंग द, मैंने हम एज फैक्टर को ले रहे हैं, तो एज इज क्या होगा, लिटरेसी को ले रहे हैं या एसेसिबिलिटी को ले रहे हैं या क्वालिटी ऑफ मैंने एजुकेशन की को, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई नाउ वी आर जस्ट गो NEP 2020 के बाद हम किस पे जाए, NEP क्वालिटी एजुकेशन के बाद जा रहे हैं, तो हम क्वालिटी के इस एस्पेक्ट को मेजर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करें, या वी विल जस्ट मेजर द क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की बात करें, क्वालिटी ऑफ वी कैन से द करिकुलम की बात करें. तो there are the so many on the basis of population and sample characteristics, then we can just choose the right tool on the basis of this thing. The another is the resource available. Suppose there are the important aspect, the time is important, कि मेरे को कितना टाइम लगने वाला है, रिसोर्सेज, इफ आई हैव ए रिसोर्सेज, आई हैव ए टाइम, देन आई विल यूज दिस पर्टिकुलर टूल एंड आई विल टेक द इंटरव्यू ऑफ एवरी पर्सन. देन बट इट नॉट टेक मोर देन, अगर हम कभी एक इंटरव्यू लें और सपोज हमने कहा कि 1000 पीपल का इंटरव्यू ले लें हम एक छोटे से रिसर्च में, इट इज़ नॉट फ्रूटफुल. बिकॉज अगर हम 6 महीने तक इंटरव्यू लेंगे, तो जो पहला इंटरव्यू का जो क्वेश्चन, जो पहला जो इंडिविजुअल होगा उसका जो इंटरव्यू आएगा, और 6 महीने बाद उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ कि हम विद इन टाइम ऑफ फ्रेम, हाउ कैन वी जस्ट कलेक्ट द डाटा इन वेरी बिल्कुल कंड्यूसिव टाइम, या हम बहुत छोटे शॉर्ट टाइम में हम डाटा को ले लें. दैट इज द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. सो रिसोर्स, क्योंकि एवरी 3 मंथ या एवरी 4 मंथ में परसेप्शन चेंज होने के चांसेस होते हैं. तो कभी भी एक रिसर्चर माइंडसेट को जब सर्वे करें या कुछ करें जहाँ पे एटीट्यूड और ये चेंज होने की बात आएगी, तो हम वहाँ पे क्या है, विद इन 2 मंथ या 1 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ में हम डाटा को कलेक्ट कर लेना चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम. देन मनी इज अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट कि वट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग. हम ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे तो वट प्लेटफॉर्म वी हैव इंटरनेट सोर्सेज या अदर थिंग्स. Then ethical consideration, privacy, consent, culture and sensitivity is important. तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. वी विल जस्ट कंसिडर दिस थिंग. प्राइवेसी का डाटा नीड टू बी, भाई उसका प्राइवेसी होनी चाहिए. कंसेंट हमें लेना है, जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे उस सैंपल के इंडिविजुअल एंटिटी से हमें वी नीड टू जस्ट टेक द कंसेंट. एंड द कल्चर सेंसिटिविटी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज किसी के कल्चर पे अगर क्वेश्चंस करते हैं, देन इट विल बी द नॉट बी फेयरफुल एंड आपका डाटा भी आपका मिसमैच हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी चूज द राइट टूल. एंड the another important is that this is my last assessment, this thing, कि suppose I am giving the two assessment here, the researcher want to study a study habit of the 2000 college student. I am giving the last questions here, and this is my last sample, last I think using Slovene formula with 5% margin of error, calculate the required sample size. This is the, and suppose you are conducting a research on the impact of social media on learning, which data collection tool would you use, why, and would you prefer an online interview or face-to-face interview? And then justify. This is the questions for me, and I hope that you will you have just listened carefully my lectures. And now my hand over to you. If you have any questions, you can ask these questions from me. I thank you once again, and hopefully you just listen that thing. And कुछ आपके questions होंगे तो you can ask, because you have a 20 minute more to just ask any question. Yes. Thank you, sir. Thank you, Paul.
Yes, It is sir. wonderful session. I don't know कि what is it was इसी तरीके wonderful से है ना. There was some I think कई जगह पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी and I hope that. नहीं But नहीं सर, ये तो हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये तो हाँ, पॉसिबल है, कहीं पर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। yes. जहाँ सुविधाएं हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज भी होती है, ऐसी कोई बात तो नहीं रह ठीक सकती है. पर होपफुली अब if anybody want to ask questions I am ready and आप हमारी हेल्प कर लेंगे. Yes, definitely. है। Yes, अनिता मैम। Yes, sir. yes. Thank you, sir, for this Thank you. enriching and enlightening session. This is to all the participants. If they have any query, they can write it in the chat box or they can ask directly when muting their mics. And, sir, this is actually, I just have a query from you. Yeah, definitely. Yes. Shipal sir sent me a profile the last evening, and I saw that there were 60 research papers to your credit. And sir, I was amazed to see that, and I'm at the initial stage of my research. So when I started my journey, I was thinking that research is a very simple thing. I'll do it like uh, easily, and as it's progressing, I find that it's not so easy to do, and it's a responsibility that I'm taking up. So, so 60 research paper, how did you manage that? No, it's very simple. देखो, I just want to ask because you have asked a very good question because it's not very enough at present because the so many researchers is published there 200 paper, 300 papers, 400 paper, 60 is very few. But you first of all you consider take that research is not very intelligence work, but it is a diligent work. Diligent work because if you go for the key daily we should keep in mind that I will just write one paper, yeah, one piece of page and then definitely you can start this thing and definitely you will publish the more paper. It's not a just that you have published 60 or 70 paper. If you publish one paper and if it will be impactful for the society, definitely you will be the good researcher in my point of view. It's don't go with the numbers, but you go with the quality papers. Only one paper, and if you there you get the citation more than 10,000, then definitely it will be fruitful for everybody. I think it will be great. But I always quoted that research is not a intelligent work; it is a diligent work. Continuously, you just follow. Yeah. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Mm. Sir, you were mentioning somewhere about e-interviews. Yes. I have one more just query, sir. Do you think that e-interviews can effectively replace traditional interviews, or just they are supplementary methods? नहीं देखो, दिस इज द वेरी सिंपल आंसर कि हम ट्रेडिशनल मेथड को कभी भी देखो वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ डिजिटल है. सम आर्टिफिशियल जो होता है मैंने सब वी आर नॉट मैंने एक रैपट जहाँ तक बात है, सपोज वी आर फेस टू फेस, वी आर सिटिंग विद टुगेदर एंड देन वी कैन जस्ट मेकिंग द रैपट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर टेकिंग द इंटरव्यू. बट when the resources are available, we can first of all just develop the environment such kind of, then we take through the interview through the digital platform, and sometimes it will remains highly confidential issue. This is the big issue in that particular moment. Suppose we are taking interview and what is the credibility of the both side, that is the important because the sometimes the but in face to face the sometimes we can just this will be the very fruitful for the. So researcher try to just get the good thing that you will just meet the to selected sample. That is the important. Yes. Thank you so much, sir. Yes. Somebody is asking some questions here. That I think they have given the some question in. Yes, sir. Pramod Goyal, sir. Pramod ji, yes, please. Sir, I have come to know that you are UGC IKS Master Trainer of India. Yes, yes, yes. Can you elaborate, sir, what it is? Yes, sir.
इफ यू यूजीसी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो एक लिस्ट मिलेगी आपको। आप इतना डालना कि डॉक्टर अनुज राज यूजीसी आईकेएस मास्टर ट्रेनर, तो एक लिस्ट आपको यूजीसी की मिल जाएगी। एंड एट प्रेजेंट वी आर 183 मास्टर ट्रेनर ऑफ आईकेएस इन इंडिया। और इसका ये हुआ था कि 2 साल पहले आफ्टर टू एक टेस्ट हुआ था, यूजीसी ने एक सर्कुलर दिया था, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड टू दैट। उन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था। आफ्टर दैट केवल 1000 was selected, after 11,000 was participants of faculty members was there। 1000 की एक ट्रेनिंग हुई थी, फोर मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। आफ्टर दैट दे हैव टेकन द वन अगेन रिटर्न टेस्ट। एक वीक का ट्रेनिंग हुई थी एंड फिर रिटर्न टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली हमने सेलेक्ट कर लिया था, उसको भी क्रैक कर लिया था। और उसके बाद फिर 1 वीक की ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बीएचयू बनारस में हुई थी। एंड दे हैव गिवन द सम आईकेएस कंटेंट एंड ऑल द मटेरियल्स इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, चाहे वो केमिस्ट्री मेटलर्जी था। आई एम स्पेशलाइज विद द केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी साइंसेस। एंड साथ ही बहुत से इस तरह के थे, चाहे आयुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, माने हमारे जो एंसेंट जितने भी इपिक्स हैं या जो भी एंसेंट मटेरियल्स हैं, टेक्स्ट मटेरियल, वो प्रोवाइड किया था। उस बेस पे एक टेस्ट हुआ था। एंड फिर सेकंड जब टेस्ट हुआ, फिर वो आईकेएस जो भोपाल यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम लोगों का फिर एक 1 वीक ट्रेनिंग हुई। आफ्टर दैट कि वहाँ फिर एक टेस्ट हुआ, तो पहले 700 में से फिर केवल 300 सेलेक्ट हुई। देन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ जो हुआ था, देन एक टेस्ट ऑनलाइन हुआ। एंड फोर्थ में ये हुआ था कि एआईसीटी न्यू दिल्ली ने फिर एक सेशन किया था, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अलग अलग। तो एक लास्ट में जो 11,000 के बाद जो बचे थे 183, तो आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ दैट। और अभी जो पंडित मदन मोहन मालवीय का जो ये भी जितने भी आप देख रहे हैं एनईपी आईकेएस के साथ चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वी आर कंडक्टिंग द यूजीसी इज जस्ट कंडक्टिंग। अगर आप देखेंगे यूजीसी आईकेएस अभी लखनऊ में हुआ था, तो आई वॉज देयर एज ए रिसोर्स पर्सन। एंड अभी गुजरात में हो रहा है, एनसीईआरटी दिल्ली में हो रहा है, तो जहाँ जहाँ यूजीसी कंडक्ट करा रही, तो वी एज ए रिसोर्स पर्सन वी आर गोइंग देयर टू जस्ट वी कैन से हम उनको एक ये कहते हैं कि आईकेएस को कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूनिवर्सिटी में कैसे कैरिकुलम में स्टार्ट करें, कैसे यूजीसी का जो मैंडेट है कि हम 5% कैरिकुलम के साथ उसको करें, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, और एक सेंसिटिविटी मैंने फैकल्टी के बीच में जगाना है कि इंडियन नॉलेज भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे इसको करा जाए, और क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी तक जो डेवलप हुए हैं, और जो हमें कोर एरिया है कि रिसर्च के कोर एरिया क्या हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में, उसके बारे में बताते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, यस, इज देयर एनीथिंग? यस, हेलो। हेलो जी, राजेश जी, हाँ, यस प्लीज। मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ, जी पिलानी जी, राजस्थान से सर। यस। तो सर एक से क्वेश्चन पूछना था, कैसे हम बीएससी लेवल या यूजी लेवल बच्चों को रिसर्च के लिए तैयार कर सकते हैं? देखिए, यदि मैं अभी कुछ कैरिकुलम में देख रहा था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब नाइन्थ में, सेवन्थ और नाइन्थ में उनको एक्चुअल में रिसर्च क्या है, यूरोप में नाइन्थ के सेवन्थ क्लासेस में और एट्थ क्लास में पढ़ाया जाता है रिसर्च क्या है। एक्चुअल में कैरिकुलम में डिज़ाइन में हमें चेंज करना चाहिए कि रिसर्च क्या है। थोड़ा सा अगर हम एक यूनिट दे दें कि रिसर्च, क्योंकि हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क के साथ साथ हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को अगर हम रख लें, अगर एक प्रोजेक्ट को हम कंपलसरी कर दें स्टूडेंट को कि हमारा एक सेमेस्टर होगा जिसमें एक प्रोजेक्ट जरूर करना है हमें, चाहे वो सोशल बेनिफिट है, 3 मंथ का है, 2 मंथ का हम कर दें। यूनिवर्सिटी कहीं रोक नहीं रही किसी को कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड अप्लाई करें टीचिंग में, और हमने कह दिया कि प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, देन
आफ्टर दैट वो डाटा कलेक्शन हम ग्रुप में भी दे सकते हैं, कई स्टूडेंट्स को वो कलेक्ट करके डाटा लाएंगे। तो वो एक सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हो जाएगा कि हाँ जी, हम लोकल में जब हम करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो जाएगी। वो क्लासरूम में नहीं आना चाहता बच्चा, ठीक है कोई बात नहीं, हमने प्रोजेक्ट दिया, सोसाइटी में जाकर प्रोजेक्ट लेकर आएगा। 2 महीने का प्रोजेक्ट अगर 200 बच्चे कर रहे होंगे तो उसकी लर्निंग होगी। अब वही रिसर्च जो जो लेके आएगा डाटा, उसी का एनालिसिस करके रिसर्च आउटपुट जरूर मिलेगा उसका। तो हम जरूर देखें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वी विल जस्ट थोड़ा सा यूजी लेवल पे प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा अपने करिकुलम में। जी। ओके सर, थैंक्स सर। यस। ओके। यस। जी। इफ एनीबडी। और अभी तो एनईपी में भी क्या क्या कि 4 ईयर, 3+4 का जो चौथा साल होगा वो रिसर्च बेस्ड होगा। तो इनिशियली उसको स्टार्ट कर दीजिए कि रिसर्च मैथोलॉजी उसको फर्स्ट ईयर से ही अगर हम एक यूनिट रख लें, धीरे धीरे सेकेंड ईयर में हम उसको देखें कि डायरेक्टली एक्चुअल में व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन के आते हैं तो बीएड एमएड वो डायरेक्ट पढ़ता है कि व्हाट इज़ द रिसर्च। लेकिन हम देखते हैं कि वो पीजी लेवल में पढ़ रहा है। अगर हम देखें, अगर हम बीएड में भी रिसर्च का इनपुट रखें, अगर हम बीए या बीएससी लेवल पे रख दें, यूजी लेवल पे, तो डेफिनेटली रिसर्च डेवलप होगी, इन्हांस होगी। तो कैरिकुलम का पार्ट होना चाहिए। वो कर यूनिवर्सिटी कर सकती है उसमें, डेफिनेटली अपने उसमें कर सकते हैं। जी। एक सर, एक क्वेश्चन और था जी। कि ऐसा अपना एजुकेशन फील्ड का कोई कंट्री में ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग सब जुड़ सके, ऐसे वैल्यूबल चीजें मिल सके हमें, कि ऑनलाइन हमें उनको देख सके कभी भी किसी टाइम पे? सेशन तो होते हैं पर कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा या फिर जो भी वर्कशॉप, हम्म। और प्रॉब्लम है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या लिंक हमें मिल जाए कि जिससे थ्रू हम बेनिफिट उठाए, फ्री टाइम में हम उसको देख के नहीं, वैल्यूबल एक्चुअल में क्या रिसर्च के है बारे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। देयर आर सम कुछ प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अभी सर ने ही अभी कहा कि पेस, जो हमारी पेस है अभी, ये जैसे एक बना प्लेटफॉर्म, इफ दे आर कंडक्टिंग द सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हम उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल, जैसे अगर हम देखें कि देयर आर सो मेनी लिस्टेड, अगर आप अब अगर हम देखें यूजीसी में एमिनेंट प्रोफेसर्स है, आप ये में। देखिए वो किस किस ग्रुप में जुड़े हैं, सपोज दे आर, देन यू कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्सो, कि जो मेंबरशिप्स है उनकी लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि प्लेटफॉर्म में जुड़ने का, जैसे कि एनसीटी ने अभी कहा था कि आप मेंटोर ग्रुप है एक, उन्होंने कुछ फॉर्म निकाले थे कि यू यू जस्ट अप्लाई फॉर द मेंट, अभी भी है शायद, तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर दिस थिंग। तो आप एक प्लेटफॉर्म में मेंटोर ग्रुप में हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स को आप कैसे मेंटोरशिप करेंगे पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट से, तो आप ऑनलाइन बहुत से लोगों से जुड़ जाएंगे। तो एनसीटी के प्लेटफॉर्म में भी अभी एक मेंटोरशिप ग्रुप का उन्होंने डिमांड करी है कि यू विल अप्लाई फॉर दिस थिंग। यस। ओके सर। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंटोर ग्रुप। यस। आई एम हाँ। ऑल्सो मेंटर ऑफ एनसीटी। यस। ओके सर। यस। बाकी बहुत से प्लेटफॉर्म में आप जरूर जुड़े, जो हमारी जितनी भी बॉडीज हैं सपोज, आप उनकी मेंबरशिप जरूर लें, चाहे वो अ, अभी इसमें आपके डीन सर जो शिवपाल सर हैं, उनके पास भी बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ पे जुड़ के, जैसे कि अभी सीपी उन्होंने एक किया था सीटीपीटी से, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स। यस। इफ एनीबडी, आई हैव 7 मिनट। यस। मैंने शायद जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन सर ने लिखा था कि उसमें कि आधे घंटे क्वेश्चन आंसर होगा। डेफिनेटली। यस। अनीता मैडम। यस। So I don't see any query in the chat box, but I have many, so many. So, sir, it may be because I'm very at a very initial stage of the research. So I just want to ask, sir, ki, how to choose ki whether we should go for the probable mode of sampling or the non-probable mode of sampling. देखो, इट्स डिपेंड ऑन द, हमने कहा ना कि इट इज डिपेंड्स ऑन यू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। सपोज You told, इफ sir. द सैंपल इज वेरी लार्ज, Yes, sir. so mostly you go for the probability sample method.
If the sample is very small, then it will be the purposity. You would select all the units from the sample. But sample is very large, then you can select anywhere from anywhere on the basis of this. So mixed method you can use that. Sometimes in the strata, suppose I am taking the strata, then we can just use the non-probability, and after that random sampling from that particular group. So mixed method we can use, yes, sometimes. Thank you, sir. But it depends on the size of the sample and availability of the sample, and it depends on the nature of the problem. If the problem is very difficult, so you have no any option to select this only, then you will meet the particular person. Then it will be the non-probability. Yes. Thank you, sir. Thank you. Yes. Ma'am, you can see chat box also. Sir, just a sec. Yes. 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 Sir, there is no query at all. I have seen it. Okay. Okay. I think Any I queries? have seen Hmm. there are Sir, some it was questions. from Pramod, sir, and he has asked it. No. प्रमोद सर ने पूछा था आईकेएस का, यस, वो आ रहा था चैट बॉक्स. हाँ जी, sir. Nothing else, sir. स्टार्टिंग में Okay. शायद एक दो क्वेश्चन है. Let's checking, sir. Checking, sir. Any other participants, if you have any question, you can ask please. सर मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूँ कि ये तो लास्ट में मैंने पूछा, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन है सर? फैकल्टी मेंबर्स या? सर मैक्सिमम टीचर हैं. ओके. उसके बाद में रिसर्च स्कॉलर्स हैं. ओके. कुछ नाइस. प्रिंसिपल डायरेक्टर लेवल के हैं. यस. यस. क्योंकि ऐसे लोग ही रिसर्च पर ज्यादा थोड़ा ध्यान दे पाते हैं ना. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो और सर आपके लिए एक छोटा सा मैंने तैयार किया है. थैंक यू सर. इसको आप देखिएगा प्लीज. थैंक यू. Thank you, sir. You have just given this thing. Really, it is great, sir. Thank you. Thank you very much. And I thank you to the Mahavir University and all the, especially thanks to Dr. Sipal Singh, sir, and Anita madam, and the कि आपने question इतने and शॉर्ट all. नोटिस में आज आप हमारे बीच में इतना अच्छा लेक्चर दिए, तो ये आपकी महानता है सर. नहीं, और इट इज नॉट सर. एक्चुअली में मैं ये सोच रहा था कि आपने यू हैव गिवन द, और मैंने ये आदेश था और मुझे फुलफिल करना था, क्योंकि एक्चुअली में इससे एक हुआ है कि आई हैव मीट द 70 मोर देन 70 पीपल, 70 स्कॉलर्स, 70 एक्सपर्ट्स आज ऑन. कम है सर, वैसे लगभग 150 से ऊपर होते हैं डेली. तो आज वही बस थोड़ा मोर लेट देन कर 150 लोगों से मैं मिल गया. तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि उन्होंने मुझे सुना. हो सकता है कि मे बी इट मे बी रॉन्ग या राइट, उनका एक डिसीजन होगा, कुछ ना कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करा होगा, तो माइंड सेट कहीं ना कहीं ये हुआ होगा कि रिसर्च में हमें क्या करना है. तो रियली इट विल बी फ्रूटफुल फ्रॉम एवरीबॉडी. एंड मैं ये कहूँगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं ये तो मेरे लिए तो एक इट वाज ए अपॉर्चुनिटी to meet the some peoples here. थैंक यू सर. Really, थैंक यू thank you, sir, and अनिता. especially the Mahavir University management, Vice थैंक यू Chancellor, सर. Registrar, Deans, and your all members who are working behind all this for the successful event. Really, thank you, sir. And you have chosen the very good topics, research थैंक यू methodology, सर. थैंक यू. social science, really. And especially also thanks to the Principal Association of the College of Education, Yes, PACE, sir. India. Thank you. Okay, sir. Sir, shall we go ahead? Yes. Yes. Okay, sir. So as we are moving towards the concluding session, I invite Mr. Pramod Goyal, PhD Research Scholar, Mahavir University, Meerut, to present vote of thanks. Pramod, sir. Thank you, Anita ji. Good afternoon, everyone. Respected today's resource person, Dr. Professor Anuj Raj, Professor Dr. Shivpal Singh, sir, who is Professor and Dean of Faculty of Education, Mahavir University, Meerut, esteemed speaker and dear participants, myself, Advocate Pramod Devatram Goyal, PhD Research Scholar from Mahavir University, Meerut. As we come to the close of this fourth day of our 10-day national seminar on research methodology, humanities and social science, it is my honor and privilege to deliver this vote of thanks. Today's session has been exceptionally insightful, and for that,
we owe our deepest gratitude to our esteemed resource person, Professor Dr. Anuj Raj. He is the professor at Department of Education and Chair Professor Dr. Ambedkar Chair, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. And as he just gave us the insight that he is one of the 118 UGC IKS master trainer in India, which is a great achievement according to me. Your lecture on theme observation, population size and sample size has been truly enlightening. You have not only clarified the foundation principles of developing a strong e-interview, online interview, but also provided practical guidance of data collection tools. Your comprehensive explanation of theme, observation, population size and sample size, e-interview, online interview, and data collection tools, planning and executing has greatly enriched our understanding and equipped us with valuable tools that will certainly support our future research endeavors. On behalf of all the participants, I express our heartfelt appreciation for your time, expertise, and dedication to nurturing young researchers like me. I would also like to extend my sincere thanks to the workshop organizer, Dr. Shivpal Singh sir, who is Professor and Dean of Faculty of Education, Mahavi University, Meerut, and coordinators like Anita Malvika ji, whose tireless efforts have ensured the smooth conduct of this program. Your meticulous planning has made today's session both fruitful and engaging. My gratitude further goes to the faculty members, technical team, and support staff for their continuous assistance and cooperation throughout the event. To all the participants, thank you for your active involvement, thoughtful queries, and enthusiastic participation. Your engagement adds immense value to this session and motivates us to continue creating meaningful learning platforms. Once again, I offer my profound thanks to Dr. Professor Anuj Raj for his invaluable contribution. We look forward to continue learning and inspiration in the days ahead. Thank you all and have a wonderful day. Thank you, Pramod ji. Thank you so much. Thank you, Pramod, and thank you, ma'am. Okay. Now I'm leaving. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, Anita, ma'am. Yes, sir. To moving towards the last part of this program, to formally conclude this, I request everyone to kindly stand for the national anthem. One minute, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Thank you very much. Anita, ma'am, anything else? It's fine. Thank you all for your valuable presence and participation. Have a wonderful day ahead and happy Makar Sankranti. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you.